A very good morning to all the students. Welcome in your online classes of social science. So in our previous class we saw that how the environment it started changing, how the climate of the world it relatively became warm, and because of this the development of grasslands took place, and with these development of grasslands the number of animals like deer, antelope, goat, sheep, cattle, these all they started growing which can survive on the grass. Then we saw that fishing also became important during this time period. Now today we will start with a new subtopic, that is the beginning of farming and herding. ये फार्मिंग और हर्डिंग क्या होता है, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, मैंने आपको बताया था दैट फार्मिंग इट वाज अ इम्पॉर्टेंट यू कैन से इनोवेशन ऑफ विच टाइम पीरियड, सो द न्यूलिथिक टाइम पीरियड, जो न्यूलिथिक टाइम पीरियड था, न्यूलिथिक एज था, तो फार्मिंग उस टाइम का क्या था, एक इम्पॉर्टेंट एक तरह से आप कह सकते हैं इन्वेंशन था. सो दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन द सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग wheat, barley, rice, they grew naturally in the different parts of the continent. और क्या हुआ कि जब ये ग्रासलैंड्स ये और ज़्यादा फैलने लगी और ज़्यादा अमाउंट में ये दिखने लगी, अवेलेबल हो गई, तो कैसे अब ग्रीन्स ग्रीव होने लगे जो कि सीड बियरिंग थे. जैसे कि आपका वीट होता है, बार्ले है, राइस है, तो ये सब क्या होने लगी, नेचुरली दे स्टार्टेड ग्रोइंग इन द सब कॉन्टिनेंट. यहाँ पे एक लाइन लिख, एक वर्ड है नेचुरली, ओके. तो ये कैसे ग्री होने लगी, नेचुरली दे स्टार्टेड ग्रोइंग. पहले ये चीज़ें किसी ने कोई सीड सो नहीं किया था, ठीक है, जब ये पहले ग्रो हुई हैं तो ये नेचुरली ग्रो हुई हैं. और फिर क्या हुआ, जितने भी पीपल थे लाइक अर्ली पीपल्स, मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, उन लोगों ने क्या किया, ये जितने भी ग्रेन्स थे इसके क्या किए, सीड कलेक्ट किए, ओके. जब ये ड्राइप हो गए मतलब पक गए तो इन्होंने उससे क्या किया, कलेक्ट किया. फिर उन्होंने देखा कि ये चीज़ें कहाँ पे ग्रो होती हैं, किस समय किस सीज़न में ग्रो होती हैं और कैसे होती हैं. तो इन्होंने क्या किया, लर्न किया दैट हाउ दीज grains they are being grown, and this it led them to think about the growing plants on their own, and in this way the people they became the farmers. जब उन्होंने देखा सारी चीज़ें देखी कि ग्रेन्स किस सीज़न में ग्रो हो रहे हैं, then what are the needs, what are the how much availability of water is being needed to grow these plants, what are the areas where they can, these grains they can grow. After knowing all these things they led that now they can on their own grow all these plants. So like this they became farmers. Then people could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. Now what they did was like when they grew the grains on their own, फिर वो क्या करते थे, वो उस ग्रेन्स को अपने शेल्टर्स के पास वहाँ पे स्प्रेड कर देते थे, वहाँ पे रख देते थे, जस्ट टू अट्रैक्ट द एनिमल्स. सो लाइक दिस दे अट्रैक्टेड, दे टेम्ड द एनिमल्स. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog, and now the first animal which was being tamed, it was the wild ancestor of the dog. Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they live. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds, and most of them ate grasses. Often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they became the herders. Herders मतलब जो चरवाहा होते हैं. तो the people what they did was they saved, they protected these animals from the wild animals like the sheep, goat, cattle, and in this way when they protected them they started keeping them, they started taming them, and this is how they became the herders. So इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चला, that how the ancient people they started farming by like first of all naturally the green bearing grasses like wheat, barley, rice, they all were naturally grown in the subcontinent. And when the people they learnt about it, that how it was grown, which kind of climate was needed to grow those grains, so like this they became the farmers, and when they protected the animals they became the herders. Okay, now domestication. What is this domestication? So it was the name which was given to the process in which the people they grew the plants and look after the animals. What the people they did was, usually first of all they selected one plant and animals
for domestication, and the plants and animals which they selected, they were not prone to disease, like they were disease free plants. Then what they did was, and they selected the plants which can bear the large size grains, like they can bear the weight of the ripe grain. And after that what they did was they sow it, वो से sow करते थे, and when it got ready to be eaten, what they did was they stored it. In this way they did for the same for the animals also, they took care after them. And like in this way the domesticated animals and plants, they became different from the wild animals and plants. And this domestication, it was a very gradual process, and it took about like 12,000 years ago. It began around 12,000 years ago in the many parts of the world. The earliest plants that was being domesticated, it was the wheat and barley, and the earliest domesticated animal, it included the sheep and the goat. So through this domestication process, the plants and animals, they were being differed from the wild plants and animals. Okay, we will see that whenever someone plants a seed, so he or she has to take care of it till the time it grows. So and the growing of that seed could be of several days, several weeks, months, or in some cases years also. So what happened when the people, they began growing these plants, so it meant that they had to stay in the same place for a long time. They have to look after the plants, they have to water them, they have to weed them, and they have to drive away all the animals and the birds till the grain ripened. So it was like the grain had to be used carefully. Then what happened, as the grains, it had been ready, so they have to store it for both the food also and the seed also. So the people, they started thinking of different ideas, like they began making the large clay pots or the wove baskets, or they started digging the pits into the ground to store these grains. And if they had stayed in a same place for a long time, so from here only the settled lives, the stepping towards their settled life also, it started. So with this we came to know that because of this planting the seeds, the early people, they started thinking, and they started making the areas, or the, you can say, the pots in which they can store these foods. So they dug out the pits in the ground, they make the wove baskets, then they made they made the clay pots. After that, what these animals, they also you can say acted as the store food. Now how these animals food, it's written of the animals, it grew on like these animals, if they gave in back was the like then if some more important, these animals, they gave the meat also, that those were reared, they could be used as the store of food, and they acted as a source of food for these early people. Now हमें ये पता चल गया कि दिस टाइम पीपल, दे बिकेम द फार्मर्स, दे बिकेम द हर्डर्स. नाउ इफ़ वी कम कि सबसे पहले फार्मिंग कहाँ पे स्टार्ट हुई, वेयर वर दीज फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स बीइंग फाउंड आउट. सो विद द हेल्प ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट, the excavations which they did, after that we can find that in the northwest part, like the present day, which is Kashmir, and in the east and south India, the finding of the first farmers and herders could be find out as a evidence. And after that, the one of the most exciting finds, it includes the remains of the burnt grain. Now what was this burnt grain? It may have been burnt accidentally, or on a purpose it was being burnt. And with this grains, the scientists, they identify that the numbers of crops, they were being grown in the different parts of the subcontinent. And they also identified the bones of different animals, through which we came to know that herdings of different animals, the domestication of different animals and the plants, it took place in the different parts of the subcontinent. Okay, towards a settled life, archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. For instance, in Burzahom, in present-day Kashmir, people built pit houses which were dug into the grounds
with steps leading into them. Now what happened, from where we get the you can say evidences of the first settled life? So the archaeologists, they have found the traces, like they have found the traces of huts and houses. उनको क्या मिले, निशान मिले, किसके, हट्स के, हाउसेस के. कहाँ से मिले हैं? लाइक फॉर इंस्टेंस इट्स रिटन इन बुर्ज़होम. प्रेजेंट डे जो कश्मीर है वहाँ पे बुर्ज़होम था. ओवर देयर द पीपल दे बिल्ड पिट हाउसेज. पिट हाउसेज क्या होते हैं? दे आर द डगिंग इन द ग्राउंड. ग्राउंड में जो डगिंग होती है, एक गड्ढा किया जाता है एक राउंड शेप का, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्टेप्स लीडिंग, मतलब सीढ़ियाँ होती हैं नीचे की तरफ. तो क्या करते थे यहाँ के लोग, द पीपल ओवर हियर, दे बिल्ड द पिट हाउसेज. वो ज़मीन के अंदर क्या करते थे, एक घर बनाते थे और उसमें नीचे सीढ़ियाँ होती थी. अब वो घर नीचे क्यों बनाते थे? सो दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन द कोल्ड वेदर. और ये घर उन्हें कोल्ड वेदर में क्या देते थे, शेल्टर देते थे. द आर्कियोलॉजिस्ट, दे हैव ऑल्सो फाउंड cooking hearths both inside and outside the huts, which suggests that depending on whether people could cook food either indoors or outdoors. and even उन्हें cooking hearths मिले हैं अंदर भी और बाहर भी. सो अगर ठंडी होती थी तो वो लोग जहाँ पे पिट हाउसेस डग करते थे inside the ground, वहीं पे खाना पका लेते थे. they would cook the inside only, and if it would be a summer season, so they may have been cooking outside the huts. Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called the Neolithic. और बहुत से स्टोन टूल्स भी मिले हैं साइट से, और वो डिफ़र करते थे. किस में डिफ़र करते थे? इन द शेप एंड साइज़ फ्रॉम द पैलोलिथिक टूल्स. जो पैलोलिथिक टूल्स थे, जैसे हमने पढ़ा था ना कि पैलोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स थे वो बहुत बड़े होते थे. तो अभी के जो टूल्स थे, दे वर टोटली डिफरेंट, एंड दैट्स वाई दे वर बीइंग टर्म न्यूलिथिक. दीज इंक्लूड टूल्स that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce. फिर अब ये जो स्टोन्स थे, इनकी क्या होती थी, बहुत फाइन कटिंग एज होती थी. और मोटार्स एंड पेस्टल्स, व्हाट आर दिस मोटार्स? यू कैन आस्क योर ग्रैंड मदर और मदर इन योर होम, जिसे हम सिलबट्टा कहते हैं. सो उस टाइम पे भी इन्हीं स्टोन्स की हेल्प से क्या किया जाता था, ये मोर्टार्स बनाए जाते थे, जस्ट टू ग्राइंड द ग्रेन्स को क्या करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, कूटने के लिए या पीसने के लिए. एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, और जो प्लांट प्रोड्यूस मतलब मे बी कोरिएंडर होता था, तो जैसे आज हम कोरिएंडर को क्या करते हैं, उसे ग्राइंड करते हैं एंड भी उसकी हम चटनी बना के खाते हैं. तो सेम वाज इन दैट टाइम ऑल्सो, एंड द पीपल एट दैट टाइम दे यूज द मोर्टार्स एंड द पेस्टल्स. At the same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used. And remember, some tools were also made of bone, and some of the tools, they were also being made of the bones also, and some of the tools, it was of the new kind of stone also. देन मैनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स, लाइक जो मटके होते थे और जिसमें खाने पकाए जाते थे, वो भी क्या होने लगे, डिफरेंट काइंड के अर्थन पॉट्स होने लगे. पीपल उन्हें डिफरेंट टाइप के बनाने लगे. सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड, सम ऑफ देम वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स. कुछ क्या होते थे, डेकोरेटेड होते थे, तो कुछ में सामान रखे जाते थे, जैसे हमने पढ़ा था ना, फॉर स्टोरिंग द फूड ग्रेन्स. एंड सम ऑफ देम was being used for cooking also. Now what these people they began using the pots for cooking food. और अब इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने pot यूज़ किया cooking food के लिए. Like especially the grains like rice, wheat, lentils मतलब जो दाल होती हैं. तो ये क्या करने लगे, अब जो ये people थे, now they started modernizing themselves, और इन्होंने utensils का यूज़ किया खाना पकाने के लिए. So the starting utensil which they used was the earthen pots. जो मिट्टी के बर्तन होते थे, उसमें इन लोगों ने खाना पकाना शुरू किया, लाइक राइस, व्हीट, लेंटिल. Okay, and they also knew that these all things, like these all food, the wheat, rice, lentils, it was very important for their daily diet also. And besides this, what they started, they began weaving the cloth also, as they started growing the cotton. उन्हें जब कॉटन के बारे में पता चल गया, तो वो क्या करने लगे, they started weaving the cloth. सो नाउ वी कैन सी द ड्रास्टिक चेंज. लाइक जो पहले के लोग थे, वो क्या करते थे, दे वर जस्ट हंटिंग एंड गैदरिंग द फूड्स फॉर देयर लाइवलीहुड्स. बट नाउ वी कैन सी द पीपल, दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग अ लॉट. उन्होंने क्या किया, दे हैव स्टार्टेड लर्निंग द थिंग्स. पहले उन्होंने क्या लर्न किया, फार्मिंग लर्न की. कैसे लर्न किया कि जो ग्रेन्स थे व्हेन दे ग्रू, तो वो कैसे ग्रू हुए, उन पे
कैसे फ्रूट्स आए, फिर वो किस क्लाइमेट में ग्रो होते हैं, व्हाट आर देयर नीड्स. विद दिस दे लर्न द फार्मिंग. देन दे ऑल्सो लर्न अबाउट द हर्डिंग के बारे में उन्होंने लर्न किया कि कैसे वो एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. एंड देन फिर उन्हें वो क्या कर सकते हैं, दे कुड डोमेस्टिकेट देम. आफ्टर दैट वी सॉ दैट हाउ दे स्टेप्ड टूवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ. वो सेटल्ड लाइफ की तरफ कैसे स्टेप किए हैं. फिर हमने देखा कि कहाँ से हमें एविडेंसेस मिलते हैं. आफ्टर दैट अब उन्हें ये भी पता चल गया कि बैलेंस डाइट क्या होता है. जैसे आज हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ते हैं, तो उन्हें इस टाइम ये चीज़ें पता हो गई थी जिस टाइम पीरियड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, द न्यूलिथिक एज पीरियड, दैट द वीट, राइस एंड लेंटिल्स, it is important for their diet. So what they did, like they started cooking it in the utensils. आफ्टर दैट लाइक पहले के जो द अर्ली पीपल्स वो क्या करते थे, दे डिडंट कवर देयर बॉडी. वो अपनी बॉडी को तो कवर नहीं करते थे. बट नाउ इन दिस न्योलिथिक पीरियड द पीपल दे लर्न लाइक द वीविंग क्लोथ. उन्होंने क्या लर्न कर लिया, क्लोथ को वीव करना सीख लिया. एंड विद दिस दे स्टार्टेड ग्रोइंग द कॉटन. उन्हें इससे कैसे क्या हेल्प मिली कि कॉटन कैसे ग्रो करते हैं. तो उन्होंने क्या किया, कॉटन ग्रो करना शुरू कर दिया. नाउ अ क्वेश्चन कम्स दैट डिड ऑल दीज थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस. क्या एक बार की सारी चीज़ें चेंज हो गई. सो द आंसर वॉज नॉट क्वाइट. ऐसा नहीं था. इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड. अभी भी कहीं बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पे द पीपल दे वर स्टिल हंटिंग एंड गैदरिंग फूड्स. एंड एल्स वेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग, but that too in a very slowly and gradually way. And it took over like several thousand years for these peoples to adopt this farming and herding. Besides all these things, in some cases the people they tried to combine these activities, doing different things during different season. और लोगों ने क्या किया, इसे combine किया, that they practiced different things during the different season. Like in summer they would not do the farming because it was the climate, it was very hot. In the winter seasons they might be doing the works which let them keep their body warmers. So what they did was they divided the activities and they did it according to the seasons. So this was how the early people, they gradually grew and learned the different things which led them towards the settled and a common life. I hope you all have understood all these topics. Okay class, thank you.